I welcome you all of you on platform of YourPedia Education, and happy Valentine's Day to all of you. It is 14th of Feb. I'm very sure none of you will be sitting on the YouTube today because you'll be spending good time somewhere else. But those unfortunate like me who are still on YouTube and watching this video, I've come here with a very important topic which I will discuss with you. And the topic which I have chosen is such that I am very sure those who are sitting on the YouTube today will be the aspirant for these exams, UPSC, Union Public Service Commission. So let me discuss one strategy here, which some of the students have asked me in past couple of days. नॉर्मली क्या होता है, देयर आर 3 एग्जाम्स दैट इज नॉर्मली इंजीनियर्स गो फॉर. पहले वो टेक्निकल तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, गेट एग्जाम वगैरह और बाकी एग्जाम, सो दैट दे गेट प्लेटफॉर्म, दे गेट पब्लिक सेक्टर और दे गेट मास्टर्स कोर्स समवेयर, सो दैट वन प्लेटफॉर्म दे गेट इट. Next step comes after, obviously, once they write this exam, that is a gate exam. The next step which they come across is, let me write here so that things are there. First, immediately after their graduation, they think of gate. Why they think of gate? Because that will ensure them some job, government sector or public sector, or that will ensure them masters. Both of these things serve as platform, platform for them to sit and think what is to be done. Normally that is the first step people do. There is a chunk of students which follow this strategy. That is what I'm going to discuss here. उसके बाद क्या होता है, once they have got this, then they go for engineering services exam. Effort required and time required for engineering services exam is a little more than gate exam. Gate exam, immediately after graduation or something, maybe you can get masters or you get platform, and you can sit there and you can think of now what is to be attained. तो फिर वो engineering services IES, Indian Engineering Services की तैयारी करते हैं, and they keep on preparing for couple of years for that. Now those of you who get into this, or those of you who get into this even without engineering services, they go for third step, which is actually civil services exam. So I will say civil services exam, through which there are different jobs, IAS, IPS, IRS. That is what they target. So normally there are 3 stages strategy which students follow. There's a group of students who aspire for that, because the reason for which you are aspiring to be in engineering services or government job, the same reason holds true for here also. So some students think, no bhai, mere ko government job leni hai, I want to be SDO, junior engineer or public sector, I want to go, and that's it. So that stage ends up here. Some of you will go for, nahi mere ko to aage jana engineering services, I want to become executive engineer, I want to start my career with that. And agar railway join karna hai to section engineer ya junior engineer kyun, why not engineering services mein aap officer ban ke start karo. That is what their thinking is. Ya PWD mein jana hai to why not IES ke through central PWD, why only state PWD? That is the thinking students have, and they think of engineering services exam. Third category, then after that comes कि यार अगर गवर्नमेंट जॉब ही करनी है तो बेस्ट क्यों ना कर लें? Why not the best in India? Why I want to become engineering officer? Why I want to become, let's say, SDO in a department division? Why not SDM? I mean sub-divisional magistrate. Why SDO? So SDM has more authority power than SDO. So that I want to go for that. So तीसरी जो है वो यहाँ से आता है. Now होता क्या है? At the age of 21, 22, you start this process of GATE exam, right? And then somewhere here 25, 26 years तक मैं ये एवरेज तुम्हें दे रहा हूँ. 21, 22 में आपने गेट की तैयारी किया, 1-2 साल आपने लगाया, प्लेटफॉर्म लिया, एंड देन यू स्टार्टेड फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज, एंड देन दिस एज यू थिंक ऑफ हिटिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज में मेरे को कुछ मिल जाए. एंड आफ्टर दैट नाउ 32 इयर्स की एज है सिविल सर्विसेज में जनरल कैटेगरी के लिए, एंड 6 अटेम्प्ट्स. देयर इज नो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लिमिटेशन हियर, नो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लिमिटेशन हियर, बट देयर इज अ नंबर ऑफ अटेम्प्ट लिमिटेशन, 6 attempts, and age also. There is no age limitation, there is a age limitation, there is age limitation. So no age, no number of attempts. No number of attempts, but age limitation. Age as number of attempts, both limitation. And hence you want कि अगर career मेरे को best चाहिए तो why not try up to 32? So I'm not saying that this is a strategy everyone is to follow. I'm not saying that. I'm saying there is a group of students who want to follow this strategy. They want to go with this strategy. That's the meaning of it. Stepwise and preparing it this particular way. Many students say, sir, why not after BTech directly IAS? Yes, you can go for that also.
Yeah, why, sir, engineering ke through hi jana? We can prepare civil services otherwise also. They can do that. But what I found over the period of time, this is more stable, this is more strategic, this is more, I'll say, efficacious strategy to follow. इसमें आपका सक्सेस रेट ज्यादा होने के चांस है. एंड इन द वर्स्ट केस, इफ यू डोंट गेट ए CS, यू गेट दिस. इफ यू डोंट गेट दिस, यू गेट दिस. तो कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म तुम्हें मिलता है. दैट इज हाउ दिस स्ट्रेटेजी हैज वर्कड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. नाउ उसी इस स्ट्रेटजी वाले जो स्टूडेंट्स को इंक्लिनेशन इस स्ट्रेटजी का है कि उन्होंने एंड में अपना ये रखा हुआ है, मे बी दे वांट टू राइट सिविल सर्विसेज एग्जाम विद वन ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट, लेट अस से मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये 3 कोर ब्रांचेस हैं जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है सिविल सर्विसेज में. तो इफ वन ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड देयर इज ओनली वन ऑप्शनल सब्जेक्ट, यू वांट टू कीप दिस, देन व्हाई नॉट कीप दिस एज ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड गो विद अदर्स. Prepare this very nicely. The moment you prepare this optional subject is automatically prepared, and then you go for general studies and all, and you prepare for third step also. That is how it is done. Now जब ये अब रिसेंटली क्या हुआ, IRMS, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज, ये एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई, एंड दिस माय वीडियो इज इन लाइन ऑफ दिस न्यू डेवलपमेंट एंड हाउ दिस स्ट्रेटेजी for this new development can be even better performed now. That is what I'm telling you now. IRMS में, as you know, there are 3 group A services जो पहले सिविल सर्विसेज के थ्रू होती थी. What are they? इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज, ट्रैफिक एंड कंट्रोल सर्विसेज, अकाउंट सर्विसेज. तो पर्सनल, ट्रैफिक एंड अकाउंट सर्विसेज जो आपकी पहले सिविल सर्विसेज में होती थी, अब दे आर शिफ्टेड टू IRMS. सिमिलरली रेलवेज की सारी सीट्स जो पहले आपकी इंजीनियरिंग सर्विसेज में होती थी, सिविल इंजीनियर्स की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की, मैकेनिकल इंजीनियर्स की, सो जितनी भी आपकी वो 4-5 सर्विसेज ग्रुप ए सर्विसेज रेलवेज की इंजीनियरिंग सर्विसेज में होती थी, दे आर ऑल्सो शिफ्टेड टू IRMS. And IRMS is the new exam now UPSC is thinking of conducting, and that new exam will be conducted for this as well as this. Now टोटल कितनी सर्विसेज हो गई? 5 से 7 सर्विसेज. एंड कितनी नंबर ऑफ सीट्स इसमें आएंगी? मेरे हिसाब से 300 के आसपास सीट्स आएंगी. जैसे अभी प्रेजेंटली 2020 सिविल सर्विसेज एंड 2020 इंजीनियरिंग सर्विसेज की जो वैकेंसीज हैं टोटल, देयर आर अप्रोक्सीमेटली 300 प्लस वैकेंसीज. तो मान के चलो कि 300 प्लस वैकेंसीज IRMS की हर साल आया करेंगी. एंड बिकॉज लार्ज प्रोजेक्ट्स आर कमिंग, तो आई एम एक्सपेक्टिंग इन द इनिशियल ईयर्स, for coming 1 or 2 years, more vacancies will be declared. That is the meaning of it. So IRMS is now new opportunity. Now इस strategy से इसका क्या benefit है? Let me ask you, when you prepare for engineering services exam, here, what topics you will be very good in? आप कौन से topics तैयार कर लोगे? पॉइंट इज टेक्निकल पेपर तो आपका यहीं पे इस स्टेज पे तैयार हो जाएगा. इंजीनियरिंग सर्विसेज का टेक्निकल पेपर विल बी प्रिपेयर्ड एट दिस पर्टिकुलर स्टेज इटसेल्फ, जब व्हेन यू प्रिपेयर फॉर दिस. प्लस यू विल आल्सो बी प्रिपेयरिंग फॉर एप्टीट्यूड, क्योंकि दैट इज द पार्ट 1 पेपर ऑफ योर इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रिलिमिनरी. एप्टीट्यूड यू विल बी प्रिपेयरिंग, एंड देन वैल्यूज एंड एथिक्स, you will be preparing. Project management you will be preparing. Economics you will be preparing. And there are some another journal engineering topics which you will be preparing, and quality features and also paper 1 का part है, that also you will be preparing. Agree? So that is you prepared this. Now UPSC में और इसमें क्या common है? टेक्निकल पेपर मैंने आपको बताया कि you can take technical paper as optional paper. That is one optional paper. 250 marks का 500 marks का वो होता है. UPSC का जो मेंस है एग्जाम, उसमें मेंस एग्जाम में 500 का कंट्रीब्यूशन आपका उन दोनों पेपर्स का है जो टेक्निकल पेपर होगा. एंड 1750 टोटल मार्क्स हैं, वो कभी मैं बाद में डिस्कस करूंगा हाउ मच इज द टोटल मार्क्स. 500 मार्क्स का ही 250 मार्क्स का वैल्यूज एंड एथिक्स का एक पेपर यहां पे होता है, वैल्यूज एंड एथिक्स. बाकी जनरल स्टडीज है. उस जनरल स्टडीज में इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल इश्यूज, एनवायरमेंटल, यस वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनवायरमेंट ऑल्सो यू प्रिपेयर एट दिस पॉइंट. सो एनवायरमेंट का पेपर कितना होता है? एक पूरा पेपर इन्वायरमेंट, बायो डाइवर्सिटी एटसेट्रा का भी पेपर होता है. तो एनवायरमेंट एंड वैल्यूज एंड एथिक्स इज वन ऑफ द डेडिकेटेड पेपर इन IAS मेंस. डेडिकेटेड पेपर है उसके लिए. सो इसका मतलब ये हुआ कि द मोमेंट यू प्रिपेयर फॉर दिस पार्ट, ये ऑटोमेटिकली तुम्हारा तैयार होता है इफ यू थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. आई एम नॉट सेइंग कि वैल्यूज एंड एथिक्स फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रिलिमिनरी पेपर 1 जो आप करोगे उससे आपका IAS का मेंस निकल जाएगा. अप्रोच अलग है, बट यस यू नो द रूल्स, यू नो द ग्राउंड रूल्स, यू नीड टू गो इन डेप्थ एंड देन यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट सब्जेक्ट. तो ये आपका पेपर उससे प्रिपरेशन हो जाता है.
Now IRMS, since it is the exam both for this and this, many students are asking कि सर IRMS में क्या कंटेंट होगा. Let me tell you, IRMS में वो अब करंट अफेयर्स को ज्यादा डाल देंगे. एंड करंट अफेयर, लेट मी टेल यू, यू वर रीडिंग करंट अफेयर हेयर ऑल्सो, लेकिन वो करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चंस अभी तक जो 4 साल में आए, दे आर फ्रॉम इकोनॉमी पार्ट ओनली. बट करंट अफेयर अगर तुम ज्यादा डिटेल में पढ़ते हो, पॉलिटिकल इश्यूज वगैरह पढ़ते हो, तो पॉलिटी के ऊपर एंड पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर 250 नंबर का एक अलग से पेपर आता है. 250 का अलग से पेपर आता है जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं. एंड इंडियन पॉलिटी अगर आपने थोड़ा सा पढ़ लिया तो आई एम वेरी श्योर कि ये जो आपका पार्ट करंट अफेयर का पार्ट के साथ उसको जोड़ोगे तो यहां पे आपका वो चीज तैयार हो जाएगी. यहां पे आईआरएमएस में करंट अफेयर शुड बी और विल बी लिटिल मोर देन व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग हियर. इकोनॉमिक इश्यूज यहां पे भी आ रहे हैं, इकोनॉमी के बेसिक्स हम यहां पे भी करेंगे. सो आईआरएमएस विल बी, आई थिंक, समवेयर बिटवीन दीज टू, नॉट एज इन डेप्थ एज यूपीएससी का सीसेट या preliminary paper, but not that deviated also as it was engineering services. Maybe more focus on what current में things are happening, economy वगैरह you need to read very carefully. What are the government policies? Government policies हम यहाँ पे भी पढ़ते थे, लेकिन engineering से related यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे. There will be more or less same, plus some general policies, political issues, constitution, parliament kind of things, वो चीज यहाँ पे आएगा. Environmental, science and technology वो भी यहाँ पे आएगा. That means those of you who are already inclined for this strategy कि सर यहां से चलना है, गेट से चलना है और IAS तक हिट करना है, those of you who have this strategy, I think if from the very beginning they start devoting 2 to 3 hours per day, let me tell you honestly, 2 to 3 hours per day for non-technical. Technical को कितना दे रहे हो तुम? 4 to 5 hours, 5 to 6 hours you are giving for technical paper, and 2 to 3 hours every day for non-technical if you are doing. I think this strategy what you are following will be very good. I mean, you can write this exam both, and the moment you write successfully these two exams, this will automatically be prepared. Now there is a way to think positive and in that direction. If you start thinking negative and if you are sitting there just waiting for the notification of IRMS to come कि जब आएगा then we will see and we will not write engineering services and all, that is not going to be right strategy in my opinion. If 300 seats are coming here, 300 seats are coming here, there are two exams and both are exams, there is a overlapping of many of the content and certain contents are separately to be done. And if you do those separate contents, you prepare yourself for the mother of all exams, UPSC, which obviously you also want to join, then that can be the best strategy. Now, having told you all this, those of you who want this kind of strategy and further discussion or guidance they want, they fill this Google form there and I will get back to you. And in the Google form, specifically write what is your query, what is your doubt. I will call you and we can discuss further. Maybe after the discussion, it will help you to make right strategy for you. And another thing, once you fill the Google form, just wait for a week or two because I will find the schedule and then call you back. Certainly I will call you, but it may take some time. So wait for 1 or 2 weeks, and within that period I will call you. You be ready with your specific questions which you want to ask me, and then I can answer those questions to you. So fill the form and then shoot your query, whatever your question is. So I will one by one call all of you and then we'll go for that. Fine. Thank you. And again, happy Valentine Day.